Hello guys, how's it going? I hope everything is well. So in this video we are going to talk about class 10th CBSE Mathematics Simple Paper of 2023 to 2004 of the we can say semester, we can not a semester, that's the seasons of that one. Alright, right. So let's see this here. Okay. Here you can say this is a basic paper and we have also hard paper. Okay, in CBSE what will happen, the simple paper is divided in basic paper and hard paper. But actually the student who are weak, मतलब जो बच्चे वीक होते हैं ना वो बेसिक पेपर देखते हैं पहले. ठीक है ना, अगर मान लो पहले आप बेसिक पेपर ट्राई करो, बेसिक पेपर आपका 100% कंप्लीट हो जाता है तो आप हार्ड पेपर पे जाना, क्योंकि हार्ड पेपर हार्ड ही रहता है. वो ऑलरेडी उसका नाम है हार्ड पेपर, तो हार्ड रहता है. बट जिसको आता है ना उसके लिए वो हार्ड नहीं रहता, ईजी ही रहता है. ठीक है, उसमें ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, बस वही सारी चीज़ें रहती है. बस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बना दिया जाता है. बस आपको मतलब मेमोरी, यू कैन से वी आर जो से दैट वी हैव टू सी दैट हाउ मच योर नॉलेज इज स्क्वायर्ड एंड दैट इज़ ओनली. ठीक है, राइट. तो यहाँ तक क्लियर होगा आपके लिए. ठीक है. सो द मीडियम क्लास इज, ठीक है, देन एसोसिएट द पॉइंट 0.4, not a 0.4, that's 0,4 lies on the y-axis. ओके ओके, ठीक है. तो चलो दूसरा देख लेते हैं. मेरे पता चलेगा क्वेश्चन इसी में रह गया, आंसर भी इसी में रह गया. ठीक है ना. ऑलराइट, तो मेरे ख्याल से ये भी क्लियर होगा. तो फिर यहाँ पे देख लेंगे. अगर डोंट बी कंफ्यूज, अगर आपको लगता है कोई कन्फ्यूजन है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं. ठीक है ना. ऑलरेडी आई पुट द प्लेलिस्ट ऑन दैट वन इन आवर चैनल, सो गो टू एंड चेक आउट फ्रॉम देयर. Okay, and if you see the 26th question, prove that root 3 is an irrational number. This is a very very important question. You know, provement question definitely they will ask you, mostly from one chapter. Our one chapter is rational number. They will definitely ask you prove that root 5 or 2/3 is our irrational number. How you have to prove that? Okay na, like something root of that one, you have to be proving question. They will mostly ask in mathematics. Okay na, right. Okay, and then see that one. Okay, if it is clear, then see 35. The following table given is the distribution of the lifetime of 400 nano lambs. Okay, find the average life lamb of that. We have to find the average of this. You know, if you know the mean, median and mode, then you can find it is related to mean, median and mode chapter. Alright, then see that one, case study sections. In this it is case study is given, and here it is case study. You have to find that one, and if it is also clear, then case study 2 is given here. Okay, alright. So then यहाँ पे आप देख सकते हो. ठीक है ना. ओके, क्लियर है यहाँ तक. केस स्टडी 3 है. ठीक है, एंड देन यू कैन सी हियर. एंड ये जो है वो अपना जो ट्रिगोनोमेट्री और कुछ चैप्टर है बोल के 7th और 6th चैप्टर के ये रिलेटेड है, 7th और 8th चैप्टर के. क्योंकि जहाँ तक मैंने पढ़ा था मुझे भी थोड़ी बहुत याद है. ठीक है ना, क्योंकि यू नो एक्चुअली आई ऑल्सो ड्रॉप्ड मैथमेटिक्स. ओके ना, बट एक्चुअली यू नो आई जस्ट इन द वे ऑफ द मैथमेटिक्स ओनली. आई एम इन द बेसिक वे, so that's why I'm telling you mathematics is not very hard, not very difficult. It is dependent on interest. Mathematics is interesting when you have interest. Okay ना, that's enough. ऑलराइट. सो ये जो है वो इसमें बस इतना ही है और कुछ ज़्यादा है नहीं. ठीक है ना. आई होप ये जो प्रीवियस जो पेपर था आपके लिए क्लियर गया होगा. ठीक है, सबको समझ में आया होगा. एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन. राइट बेल. आई होप दिस वीडियो एंड दिस पेपर इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, एंड वी विल मीट अनदर वीडियो. जय हिंद.